Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Rizwan and this is ECAT English and lecture number is 15. The topic of today's title is how to attempt an odd question in comprehension. Under this statement, we would discuss three things that can come in a question. Before discussing the techniques, let's discuss what those three things are. Number one, what is paradox? Second, oxymoron, and third is irony. Keep this in mind that all of these things depict a kind of contradiction but there is a slight difference in all of these things. Paradox is a contradiction of action. It comes in a sentence, whereas oxymoron, it is a phrase. It is a phrase of two different expressive ideas. And the last point is irony. Irony, it is discussed on different levels. For example, there can be a verbal irony, or there can be a situational irony in a paragraph, and there can be a dramatic irony. Remember, paradox is a contradiction of action. On the other hand, oxymoronic phrase जो है ये दो different ideas को आपस में मिलाती है. For example, हम सबसे पहले let's discuss the example of paradox. Let's say it is said that he is busy doing nothing. In this sentence, there is a kind of contradiction in action. He is busy in doing nothing. You cannot be busy and do nothing. And if you are doing nothing, you cannot be busy. If you are busy, you must be doing something. तो there is इसके अंदर ये देखें कि एक आपको contradiction जो है वो मिल रही है. इस तरह के sentences जिनके अंदर actions की contradiction होती है, एक और example हम ले लेते हैं. He is busy doing nothing. The store is crowded because nobody goes there. Now, the store is crowded because, or that's why nobody goes there. अब देखें, if nobody goes there, how can the store can be crowded? The store is crowded because everybody is going there. If nobody is going there, the store cannot be crowded. तो ऐसे sentences जिनके अंदर एक contradiction होगी in action, इस sentences को हम कहते हैं कि these sentences are paradox. On the other hand, oxymorons are contradictory phrases. For example, I would say old boy. Both of these words are contradictory or opposite to each other. If you are old, you cannot be boy. If you are a boy, you cannot be old. और examples देखते हैं, जैसे कि honest thief. Either you can be honest or you can be a thief. लेकिन ये जो इस तरह के expressions होते हैं, they are used by the authors to discuss a certain idea. हम इसे sentence की form में देखते हैं. Robin Hood
was an honest thief because he used to help the poor. Now, this oxymoronic statement जो है, it is used for Robin Hood. He was celebrated honest because he did not thieve the rich just to exploit their resources. He thieved the rich to help the poor. That's why he was considered an honest man as well. एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे. It is definitely doubtful that he will come to the party. In this sentence, the phrase definitely doubtful is an oxymoronic phrase. Definite means to ascertain some kind of certainty. It shows surety, permanency. On the other hand, the word doubtful, it creates uncertainty. But both of these words are used together to express an idea. सच जो आइडियाज़ हैं, जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स को एक्सप्रेस करते हैं, जो कंट्राडिक्टरी इन नेचर हैं, उनको साथ लिखने से वो ऑक्सीमोरोनिक स्टेटमेंट्स बन जाती हैं. तो ये जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरोन और आयरनी, ऑल ऑफ देम आर कंट्राडिक्शन ऑफ सम काइंड. लेकिन पैराडॉक्स जो है, इट इज़ अ कंट्राडिक्शन ऑफ एक्शन. ऑक्सीमोरोन जो है, ये फ्रेज है, एक स्टेटमेंट है कंट्राडिक्टरी. ऑन द थर्ड हैंड, जो आयरनी है, it can be used in a paragraph in different levels. For example, verbal irony. What is verbal irony? Verbal irony का मतलब होता है to express certain words to show a different meaning than their literal meaning. कि author जो है वो इस तरह ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है और उन वर्ड से उसका जो मतलब होता है वो उन वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. इसकी हम एग्जांपल करते हैं. When he went to bed, he was bold. On the first ball. The bowler said to him, "Nice shot, champ." Way to get hold of it. Ali wanted anxiously to have a part in cricket match. When he went to bat, he was bowled on the first ball. The bowler said to him, "Nice shot, champ. Way to get hold of it." अब इस पैराग्राफ के अंदर देखें कि वो जो वर्ड्स हैं जो बॉलर ने उसे कहे हैं, नाइस शॉट, चैम्प, वे टू गेट होल्ड ऑफ इट. बट इन रियलिटी Ali could not perform well in the cricket match.
He was bowled at the first ball. लेकिन ये जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इनका लिटरल मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे उनको डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया गया। ऐसे वर्ड्स जो अपना मतलब जो है उनका एक्चुअल मीनिंग्स कुछ होता है, लेकिन दे आर यूज टू एक्सप्रेस अ डिफरेंट आइडिया। इस तरह के वर्ड्स को, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं वर्बल आयरनी। दूसरी तरफ देखते हैं, व्हाट इज सिचुएशनल आयरनी। Situational irony is something that a situation is created when the character expects something to happen, but in reality a different picture comes out of it. Something different happens. Example, the watchman after his shift went to home to find some rest. Unfortunately, there was no one at home, and the door was locked as well. In this example, we see a watchman who wanted to take some rest, but unfortunately he was expecting to go home and take some rest. But unfortunately, when he reached home, he came to know that there was no one at home at that time, and the door was locked as well. He was expecting something different, but in reality something else happens. This is called situational irony. अब हम देखते हैं what is dramatic irony. ड्रामेटिक आयरनी ये है कि जिसके अंदर जो करेक्टर है ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द कमिंग इवेंट्स, बट द रीडर्स और द ऑडियंस दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कमिंग इवेंट्स, दे नो व्हाट विल हैपन आउट ऑफ समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, Ali was too tired and busy in his thoughts and unknowingly he tumbled into a movie set. He saw a man handing a knife towards a lady. He instantly jumped onto him and grasped the man. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ड्रामेटिक आयरनी एक सनसनी, एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है इनटू एक पैसेज के अंदर. इस पैसेज में जैसे हमने देखा कि अली जो है ही वॉज अनअवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स, ही वॉज अपसेट, ही वॉज बिजी इन हिज थॉट्स, ही डिड नॉट नो what was going to happen, and suddenly he saw a man who had a knife
he was pointing his knife towards the lady, तो उसने उससे जल्दी से पकड़ लिया. But the readers and the audience know the consequences of his actions. They know that the man who had a knife was not a real thief. He was not a murderer, but he was an actor. तो इस तरह के जो ड्रामा जो क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर सिचुएशन या इवेंट्स जो हैं दे डिपिक्ट अ डिफरेंट पिक्चर, इस तरह के जो पैसेजेस होते हैं उनको हम ड्रामेटिक आयरनी में लेके आते हैं. अब जैसा कि हमने अपने लेक्चर के स्टार्ट में देखा था कि हाउ टू अटेम्प्ट एन ऑड क्वेश्चन इन कम्प्रीहेंशन, तो ऑड क्वेश्चन जो हैं वो वी सॉ के 3 डायमेंशंस में आ सकते हैं. देयर कैन बी अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, देयर कैन बी एन ऑक्सीमोरॉनिक क्वेश्चन, और देयर कैन बी अ काइंड ऑफ आयरनी दैट कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर एज वेल. अब हम टेक्निक्स देखते हैं हाउ टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. सबसे पहले कि हाउ टू अटेम्प्ट a paradoxical question. In Shakespeare's play Hamlet, his protagonist Hamlet at one time says, "I must be cruel to be kind." This statement is a paradox in its nature. You cannot be cruel if you want to be kind. The act of being cruel contradicts the act of being kind. Now, how to attempt this answer? जो paradoxical questions होते हैं उनके अंदर जो keywords होते हैं वो मैं आपको ये आंसर लिखने का तरीका लेट्स डिस्कस कैसे कैसे कि point from the passage, आगे जो कीवर्ड आएगा contradicts, second point from the passage, आगे कीवर्ड आएगा because, आगे what and how these contradictory points seem to show coherence. For example, if we want to answer this question, I must be cruel to be kind, so we would say the act of answer being cruel contradicts the act of being kind. Despite this, Hamlet wants to be cruel towards his uncle and kind towards his mother. इस क्वेश्चन के अंदर जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एडअप की गई है वो ये है कि हैमलेट की जो स्टोरी है उसमें यह है कि हैमलेट के बाप को उसके छोटे भाई ने, हैमलेट के चचा ने उसका मर्डर कर दिया, और उसके जो चचा हैं
he married Hamlet's mother. Now he wants to be cruel towards the murder of his father, and he does not want his mother to be the beloved of his uncle. That's why he wants to be cruel towards his uncle, and he wants to be kind towards his mother. इसके अंदर जो कीवर्ड्स आपने हमेशा ज़हन में रखने वो ये हैं contradicts, because, और यहाँ पे despite this. इस तरह के जो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स हैं उनका जो है वो आंसर आप अच्छे और आसान तरीके से लिख सकते हैं. Let us now discuss how to attempt an oxymoronic statement. जैसा हमने पहले भी देखा कि ऑक्सीमोरॉन जो है वो एक कंट्राडिक्शन है इन फ्रेज. दो डिफरेंट तरह के आइडियाज़ जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा साथ साथ मिलाकर. तो इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो है अनयूजुअली और इफेक्टिवनेस. फॉर एग्जाम्पल, if I say Ali had a daytime nightmare, he awoke with fright and shrieked hysterically. ये सिनारियो है हमारे पास. अब इसमें हम क्या देखेंगे कि डे टाइम नाइटमेयर. नाइटमेयर इज समथिंग दैट कम्स इन द नाइट. एक जो डिफरेंस है वो ड्रीम और नाइटमेयर के अंदर, ड्रीम जो है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन है उसकी, और नाइटमेयर जो हैं ये नेगेटिव कॉनोटेशन में आते हैं जब हमें कोई बुरा ख्वाब आता है. और नाइटमेयर जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद द नाइट, के रात के वक्त सोते हुए. और इफ़ दे आर कमिंग इन डे टाइम तो एक सिनारियो जो है, एक एक्सप्रेशन जो है, इसका मतलब है कि राइटर जो है ही वांट्स टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ द रीडर. तो दिस इज़ वेरी अनयूजुअल व्हेन यू हैव नाइटमेयर्स इन द डे टाइम. तो अगर इस तरह के क्वेश्चन को जो ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट्स हैं इनको आंसर करना हो तो अनयूजुअली इन इफेक्टिवनेस. This is unusual to have nightmares in daytime, but its effectiveness is that it creates an expression of fear in the minds of the readers. तो ये unusual और effectiveness जो है इन दोनों को, ये कीवर्ड्स हैं इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए. आगे देखते हैं. We have already discussed how to answer a question based on certain kind of irony, paradox and oxymoron. These are three types that come under the statement of an odd question in comprehension. I hope कि ये वीडियो जो है it will be fruitful for you. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लीव दैट इन जो कमेंट सेक्शन. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.